Okay, we are ready to start. Good morning, everyone. So can anyone confirm if you are able to hear me? Okay, great, great. Thank you, Qasim and Rehan. And Mobeen, of course, yes. Okay, just a show of hands, how many people were able to see the first video? The first video, first lecture video. First lecture video. Okay, almost everyone. Almost everyone. Thank you very much. Okay, there wasn't really much in the first video, first lecture video, as we said that it was from the last year, and the first portion of the video was pretty much a repetition of what we did in the last lecture on Tuesday, going over the policies, grading schemes, etc., etc. Except that it was, not just for that one lecture. Last year when I taught the course, every lecture was a live lecture. But this year we are going to have this, discussion-based learning process. Now, how many people were able to watch the second video? Again, show of hands. Great. Excellent. And how many people were able to go over the class notes? Well, not really the class notes. These are relatively neatly written notes which are uploaded on LMS. How many people were able to go through those notes? A few people, maybe, yeah, some people have gone through those notes. Thank you very much. So, having watched, since most people have watched both the videos, I would like to open the discussion. As we said that we are going to follow this discussion-based learning model. I would open the floor and let people ask questions, or even if you don't have a question, if you want to say something about the course material, of course, which is covered in the first two lectures, basic counting principle, the antenna problem, permutations and combinations. If anyone wants to say anything about that or ask a question, just raise your hand and then I will call your name and you can just say whatever you want to say. Ji Iman, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. I had a question. In the second video, you were doing this question example where you said that we have to choose a committee from a group of women and men. Mm-hmm. And you did this part where you put a restriction that two fighting men cannot be in the same team. So I didn't understand what you were doing. However, I just had this question in mind, that a different approach to it, which I initially thought, like before you solved it, I initially thought that, okay, maybe this is one way we can do it. एक तो हमने party में overall सारी की सारी निकालनी थी without any restrictions, right? So like for the second part, what if we find
the number जिसमें दोनों for sure हैं. So I was thinking that जिस तरह I think you had 7 men and you had to choose 3. So for that, if we do something like 5 choose 1, and then if we subtract that from the initial, would that still be the same thing? Because like abhi to we had only आपने 2 consider cases कर लिए, but like if we had a greater number of cases. Sure. I understand your question. So for the benefit of everyone else, and for the confirmation as well, I think Iman is talking about the question which has also been solved. ये जो आपके lecture notes हैं जो हमने LMS पे upload किए हैं, if you open those up, it's on page 6 of those notes. Please confirm that you are talking about the same question. We have a committee, 5 women and 7 men, total of 12 people. We have to pick a committee of 5 under different situations. That is the question that you are talking about, right? Yes, sir. Okay. So if I will give you 15 seconds to open up that notes handout, notes की जो document है वो अगर खोल लें, and if you go to page 6 of that, let me just try to share my screen here. Let's see if I can do that. Screen sharing on, and there you go. So this is the question that we are talking about, right? So in this example, we have 5 women and 7 men, total of 12 people, and out of these 12 people, we have to pick a committee of 5. So the specific question that has been asked is about part 3, but let's just very quickly go over part 1. Out of these 12 people, you have to pick a committee of 5. How many ways you can pick this committee? That is going to be 12 choose 5. You pick 5 people out of these 12 people without any ordering of these 5 people. Okay, so that is 12 choose 5. 12 choose 5. If somebody is not able to understand even the first part, please make sure that you intervene. ये discussion based learning है, so I would like everyone to be very very clear about कि ये आप number of ways कैसे find करते हैं. So you have a group of 12 people, 5 of which are women and 7 are men. Everyone is able to see the shared screen? Shared screen नजर आ रही है ना? Yeah, great. So 12 में से 5 लोगों को हमने pick करना है. So how many ways you can pick 5 people out of a group of 12? Imagine 12 people in the class. उसमें से हमने 5 लोगों को pick करना है. So the number of ways you can do that, as we have seen in the first 2 lectures, is 12 choose 5, which is 12 factorial divided by 5 factorial divided by 12 minus 5, which is 7 factorial. Yeah. And it turns out to be 792. This is how many ways, the number of ways you can pick 5 people irrespective of their gender. Okay. Now, how many ways, coming to part 2, how many ways you can pick a committee of 5 with 2 women and 3 men. 2 women and 3 men. So in how many ways you can pick those? You can pick those, you are restricted to pick 2 women, exactly 2 women out of these 5. So how many ways you can pick 2 women out of these 5 women is 5 choose 2 in exactly the same way that we have done in the first part. कि वो 12 लोग हैं, irrespective of their gender, 5 हमने pick करने हैं तो 12 choose 5 है. But now we are becoming more considerate about the gender. So out of the 5 women, I have to pick 2 women. Out of 7 men, I have to pick 3 men. Okay. How many ways we can do that? So first of all, there are 2 things happening here. One is out of 5 women, you are picking 2 women, which is done as we have done in part 1 in 5 choose 2 ways. 5 choose 2 ways. And then you have
to pick 3 men out of these 7 men. 7 choose 3 is 7 choose 3 ways. So now there are 5 choose 2 ways of picking 2 women out of 5, and 7 choose 3 ways of picking 3 men out of 7. What is the total number of ways of making a committee of 2 women and 3 men? So you just multiply those two together. And the reason that you multiply those two together is because of the basic counting principle. Basic counting principle. And what is the basic counting principle? Basic counting principle is that a coin toss kiya hai. How many ways? 2 ways. There are 2 outcomes that you can see. Ek dice roll kare. How many outcomes? 6 outcomes. If you roll both of those together. Toss the coin and roll a dice together. एक experiment ऐसा है जिसमें वो दोनों काम कर रहे हैं. So tail के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और head के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है. So this is 2 times 6, not 2 plus 6. It's 2 times 6. So you just multiply those 2 numbers together in exactly the same way. 5 choose 2 is the number of ways of picking women. 7 choose 3 is the number of ways of picking 3 men. Multiply those together is the number of ways of picking a committee of 5, which will consist of 2 women and 3 men out of a total of 5 women and 7 men. So that number turns out to be 350. So part 2 is done. Okay. This is only the context. I just wanted to make sure that everyone who is attending gets that context. Okay. The question which has been asked is this third part. Okay, you pick 2 women and 3 men, just like in part 2, but there are 2 men out of these 7 people, out of these 7 men who refuse to be on the same committee. How many ways now? So इसमें हमने divide and conquer वाली जो है ना वो trick लगाई है, and the problem is solved in some way, and Iman has suggested another way of looking at this problem. So first is to understand what we mean 2 men refuse to be on the same committee. What that means is you can pick a committee in which let's say कि जो 2 लोग हैं वो Ahsan और Tariq हैं. You can't have both Ahsan and Tariq in the committee which you pick. Ahsan और Tariq इकट्ठे नहीं हो सकते. Ahsan अकेला हो सकता है, Tariq ना हो. Tariq अकेला हो सकता है, Ahsan ना हो. And it is also possible that both of them are not in the committee. So इसको divide and conquer हमने कैसे किया है कि सबसे पहले we pick 3 men excluding both the fighters. 5 में से 3 लोगों को हम pick कर लेते हैं, out of those 3 men excluding both the fighters. So this would be 5 choose 3 and 2 men from the non-fight. So part A, what we're doing here is we had a total of 7 men. जिसमें Ahsan और Tariq भी थे. तो हम ऐसा करते हैं कि Ahsan और Tariq को हम अलग कर देते हैं. Ahsan Tariq को अलग कर दिया तो बाकी हमारे पास we are left with 5 men. ठीक है. Remember, Ahsan and Tariq are the guys who are fighting. So 5 जो आपके पास रह गए हैं. So you pick 3 guys क्योंकि हमने 3 ही pick करने हैं. So you pick 3 guys out of those 5, and 10 is the number of ways that you can pick 3 men out of those 7 men, not just 5 men, out of those 7 men, assuming that both Ahsan and Tariq are sitting outside. उनको हमने select नहीं करना. Everyone agrees with that? ये part A जो है वो ये number of ways of selecting 3 men out of a total of 7 men, excluding those 2 guys. And when I say excluding those 2 guys, वो 7 में से वो 2 निकाल दें और उनको बाहर रख दें. तो बाकी आपके पास 5 बच गए और 5 में से आपने 3 चूज करने. So 5 choose 3 is the number of ways. So 5 choose 3 is the number of ways. 10 is the number of ways you can pick a committee of 3 men out of 7, and this committee does not include Ahsan, does not include Tariq. Ahsan और Tariq दोनों नहीं है इसमें. So इर्तिजा का क्वेश्चन है, either one of the 2 is in the committee? No. In part A, neither of them is in the committee. Neither of them is in the committee. ठीक है? इर्तिजा, does that make sense to you?
Oh, okay, for part B. For part B, you pick 2 men from the non-fighters and 1 from the fighters. For part B, you pick 2 men from the non-fighters. Non-fighters अब आपके पास कितने हैं? टोटल 7 थे. 7 में से एहसन और तारिक हमने उनको अलग किया और उसमें से 2 पिक कर लेते हैं, which is done in 5 choose 2 ways. ये आप देखें पार्ट बी के अंदर. पार्ट बी में what I'm trying to do is I am going to pick exactly 1 fighter. Exactly 1 fighter. ठीक है, पार्ट बी में एग्जैक्टली 1 फाइटर हम पिक कर रहे हैं. क्यों एग्जैक्टली 1 फाइटर पिक कर रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू पिक बोथ द फाइटर्स. सो नंबर ऑफ वेज आई कैन पिक अ कमेटी ऑफ 3 men. 3 men के 2 में से 1 फाइटर आ जाए और 5 जो नॉन फाइटर्स हैं उसमें से बाकी 2 लोग आ जाए और वो 2 कोई भी हो सकते हैं. सो 5 choose 2 multiplied by 2 choose 1, which is the 20, which is the number of ways that you can pick a committee of 3 men out of 7, such that this committee includes exactly 1 fighter. Exactly 1 fighter. Part A में exactly 0 fighter. Exactly 0 fighter. And part B में exactly 1 fighter. So convince yourself that the number of ways, ये जो 10 ways हैं जो part A में है और जो number of ways जो part B में है 20 ways, these ways are different ways. These ways are different ways. तो ये different का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये 10 में से कोई जो है वो इस 20 के अंदर इंक्लूडेड है. नहीं, because each of these 20 ways in part B includes 1 fighter, and each of the 10 ways in part A excludes both the fighters. Excludes both the fighters. So very important to understand कि ये 10 ways अलग हैं और ये 20 ways अलग हैं. That means there is 30, which is the total number of ways, 30 number of ways that I can pick a committee of 3 men, जिसमें से दोनों फाइटर इकट्ठे नहीं आ सकते, या कोई भी नहीं होगा, या at most एक होगा. If that makes sense to you, I can move forward. Part C is about picking 2 women from 5, और उस केस में जो है कोई issue नहीं है, women are not fighting. So 10 is the number of ways as before. So ये जो 10 number of ways of picking 2 women है, और 20 plus 10, which is the 30 number of ways of picking 3 men है, जिसमें at most 1 fighter हो. दोनों को multiply करेंगे, you get 300 as the answer. Now question ये था कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ऐसी कमेटी तलाश करें जिसमें वो दोनों फाइटर्स आ जाएं, ठीक है. Before we move forward, हलीम का एक क्वेश्चन है about part B. Part B जो है वो ये कह रहा है कि आपने there are 7 men, ठीक है. We are only focusing on men in part B, ठीक है. Part A और part B में only focusing on men. Part B में I'm saying कि we are picking 2 men from the non-fighters and 1 from the fighters, ठीक है. 3 men आपने पिक करने हैं out of 7, ठीक है. उस 7 में से 2 लड़ाई करने वाले हैं, एहसन और तारिक. मैंने उन दोनों में से एग्जैक्टली 1 पिक कर लिया. So 2 choose 1 is telling you the number of ways of picking 1 fighter out of the 2. और मुझे पता है कि एहसन और तारिक 2 लोग हैं. How many ways you can pick? One guy out of Ehsan and Tariq. There are only 2 ways. या Ehsan पिक करेंगे या तारिक पिक करेंगे, ठीक है. So 2 choose 1 जो है ये आपके पास 2 ही आ जाता है, ठीक है. And then you need 2 more people. You need 2 more men. वो कहां से आएंगे? वो नॉन फाइटर्स में से आएंगे, वो जो बेचारे बच गए, ठीक है. So रेहान, आपका जो क्वेश्चन है ये हम बाद में जवाब देंगे. How would the calculation change if one of the men and one of the women refuse to work with each other? Different question है. Let me just first focus on this question जो ईमान ने पहले सवाल किया था, उसको जरा मुझे आंसर करने दें, ठीक है. So the way that we want to approach this question, जो ईमान ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कमिटीज का आपको पता है, ठीक है, कि ये आपने पार्ट 2 जो था 1 में आपने टोटल नंबर ऑफ कमिटीज निकाली, और पार्ट 2 जो था उसमें आपने वो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज निकाल ली जिसमें 2 वुमेन एंड 3 मैन है. कोई फाइट नहीं कर रहा किसी से. नो मैन इज फाइटिंग, नो वुमेन इज फाइटिंग. ये पार्ट 2 में आपने 350 जो आपने आंसर निकाला है, दिस इज दैट नंबर ऑफ, ठीक है. नाउ ईमान कह रही है कि
why don't you, in part 3, why don't you find the number of ways, why don't you find the number of ways, एक ऐसी कमेटी ढूंढें जिसमें वो दोनों के दोनों फाइटर हों, ऐसा और तारिक को दोनों को बिठा दें, और फिर वो जो नंबर आएगा वो नंबर हम माइनस कर दें इस 350 में से. Can we solve the question that way? The answer is of course we can solve the question that way. ठीक है. In this problem if you solve the question that way, उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो कोई इंक्रीज नहीं होगा, शायद डिक्रीज भी नहीं होगा. दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. देयर आर सिचुएशंस जहां पे एक सवाल को आप मुख्तलिफ तरीकों से काउंटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन यू हैव टू पिक द राइट वे. ऑल ऑफ दीज विल गिव यू द सेम आंसर. सारे करेक्ट मेथड्स होंगे तो सब आपको करेक्ट आंसर देंगे, लेकिन कुछ मेथड्स मुश्किल होंगे काउंटिंग के, कुछ मेथड्स आसान होंगे. ठीक है. And with experience, when you do the homework problems, when you go through the class lectures, किताब पढ़ेंगे, तो you will find tricks of the trade, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ज्यादा आसान होगी. ठीक है. सो आंसर सब करेक्ट होंगे. यू नो, इफ यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, देन यू विल ऑलवेज फाइंड द करेक्ट आंसर. जैसे इन दिस केस इफ यू फाइंड अ कमेटी ऑफ पीपल जिसमें वो 2 वुमेन हो आपकी और 3 मैन हो, जिसमें से वो फाइटर्स दोनों को आपने पिक किया हुआ, तो इफ यू हैव दैट नंबर ऑफ कमेटीज, उसको आप 350 में से माइनस कर दें, यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है. एंड इट विल नॉट मेक द क्वेश्चन सॉल्यूशन एनी डिफिकल्ट, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं वो करेगा. ठीक है. बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. आपके सामने कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, काउंटिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिनके लिए there will be ways that you can easily apply to solve the problem. There will be ways which will make the question very tricky. So you will need to identify an easy way to solve the question. And how will you know okay, what way is the easy way? That will come with the practice. Okay. So coming back, Iman, does that answer your question, or question या कुछ और था शायद आपका? सर यही क्वेश्चन था. मैं बस यही कंफर्म करना था. हम यही करेंगे ना कि since those 2 are already chosen, तो we'll say 5 choose 1, which is I think 5. तो उसके बाद बस इसको हम ऐसे करें. हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे करेंगे कि एहसन और तारिक दोनों को आपने चूज करना है, तो 2 choose 2 कर लेंगे. That is the number of ways you pick Ahsan and Tariq both, and there is only one way. By the way, if you solve 2 choose 2, you will get 1. 2 choose 2 का मतलब है 1 ही आंसर आएगा आपके पास. ठीक है. And then out of the remaining 5 non-fighters, you will pick 1 person, और उसका आंसर जो है वो आपके पास 5 आएगा. आंसर उसका आपके पास 5 आएगा. So 5 multiplied by 1, there would be 5 ways that you will select a committee of 3 men out of 7. 3 men out of 7. There are 5 ways of doing that. ठीक है. और अगर आप ये देख लें कि उस 5 ways को आप मल्टीप्लाई करें, वो नंबर ऑफ ways you pick a woman, it's 10 times 5, so there are 50 ways you pick a committee of 2 women and 3 men, which includes both Hassan and Tariq. ठीक है. 50 है. उस 50 को इस 350 से माइनस करेंगे तो you will get 300, which is exactly the same that we have gotten here. I hope that clarifies, that answers your question. Yes, it does, sir. Thank you so much. ठीक है. So that's great. ठीक है. So Rehan, coming back to your question, which is a completely different question. ठीक है. इसके अंदर again you will need to divide and conquer. You will need to divide and conquer. So अब आपने ये करना है कि you have to pick 1 man and 1 woman. आप they are fighters. ठीक है. 1 woman and 1 man, they are fighters. You don't want them to serve on the same committee. So both ways जो हमने अभी बताई हैं, जो एक ईमान ने पूछा था और एक जो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. So try to find a committee जिसमें वो एक मैन और एक वुमेन, ये दोनों जो फाइटर्स हैं, both of them are included. इसका मतलब है कि जो 5 वुमेन है, 5 वुमेन में से एक वुमेन मैंने फिक्स कर दी और बाकी 4 में से फिर मैं रिमेनिंग 1 चूज करूंगा. इसी तरह 7 मैन में से मैंने वो एक जो फाइटर है उसको मैंने पिक कर लिया
और बाकी 6 में से मैं 2 चूज करूंगा, बाकी 6 में से 2 चूज करूंगा. So you will be able to find the number of ways that you will find a committee of 2 women and 3 men in which both the fighters, 1 woman and 1 man, both the fighters are included. उसको इस 350 में से माइनस करेंगे, you will get the answer. Does that answer your question, Rehan? Great, great. कोई और इस काउंटिंग के ऊपर किसी के कमेंट्स हों? One thing I would like to note here is कि जरा मैग्नीट्यूड भी देखें इन नंबर्स का ना. पार्ट 1 के अंदर when you freely select a committee of 5, कोई पता नहीं आपके पास हो सकता है 5 के 5 men आ जाएं, ठीक है. There is no restriction on the gender. The answer is 792, ठीक है. And if you look at part 2, the answer is 350. I am putting a constraint कि 2 women और 3 men होनी चाहिए, ठीक है. And you know, think about it कि ये जो नंबर मेरे पास 350 आया है, ये कभी 792 से बड़ा नहीं आ सकता था. Why? Because that 792 includes these 350 orderings. ये जो 350 ways जो आपने कमेटी पिक की है, जिसमें 2 women और 3 men आ गए हैं, ठीक है. 792 is the number of ways of picking 5 people. वो उसके अंदर 2 men और 2 women और 3 men जो है वो automatically included है. So that 792 is the number which includes these 350, जो जिसके अंदर हमने exactly 2 women and exactly 3 men select करने हैं. Similarly, if you go from part 2 to part 3, ठीक है, तो part 3 को मैंने जरा और restrictive कर दिया. मैंने कहा कि आपने 2 women और 3 men पिक कर रहे हैं, but अब मैंने additionally कहा कि ये these 2 people, these 2 men, Hasan and Tariq, they don't want to work together. So these 300 जो मेरे पास ये आंसर आया है, these 300 ways are included in these 350, ठीक है. Does that make sense to everyone? कोई क्वेश्चन हो इस चीज के बारे में कि why this 792 is bigger than this 350? ये जो आपके पास 350 वाला जो आंसर है, ये आपने एक कंस्ट्रेंट लगा दी है. आपने कहा है कि मैं लिमिट कर रहा हूं कि बस 2 वुमेन और 3 मैन होने चाहिए, इसलिए वो नंबर आपके पास अब छोटा आएगा क्योंकि आप फ्रीली सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. So 792 includes that 350 number, and similarly that 350 includes that 300 वाला number. And by the way, this 300 वाला number 792 में भी included है, of course. Okay, so we have a couple of questions. Asim, you go first. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, last lecture के अंदर towards the end you did the antennas वाली example. तो उसके अंदर when you were generalizing जिसमें n antennas हैं और m antennas जो है वो defective है, तो उसकी आपने कहा था कि वो जो probability that the system works वो आपने मतलब as a problem दी थी, तो वो आप solve कर सकते हैं? नहीं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डिस्कशन करेंगे. सॉल्व करेंगे तो वो तो लेक्चर ही पूरा हो जाएगा. वी कैन गो ओवर इट. सॉल्व भी हुई है वो यहाँ पे. इफ यू लुक एट द नोट्स, वो यहाँ पे नीचे सॉल्व भी हुई है. बाय द वे, जनरलाइज द एंटेना प्रॉब्लम, ये यहाँ पे पूरी की पूरी सॉल्व हुई है, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि ये आप इसको जरूर देखें. अभी हम क्विकली से पढ़ लेते हैं इसको, यू नो, इफ यू वांट. अदरवाइज अगर आपको ये देखने का मौका नहीं मिला है तो आई वुड सजेस्ट, और इनफैक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एग्जैक्टली हमने लेक्चर के अंदर सॉल्व भी किया था. तो इंस्टेड ऑफ यू नो सॉल्विंग इट अगेन, मैं कर सकता हूँ यहाँ स्क्रीन शेयर करूँ और फिर 20 मिनट उसके अंदर जाया हो जाएंगे. उससे बेहतर है कि लेट्स, ये पहले सॉल्व हुआ है, लेक्चर के अंदर भी था, सो लेट्स क्विकली गो ओवर इट. हाउ अबाउट दैट? ठीक है. So let's generalize the antenna problem. You have n antennas, out of which m, which is smaller than or equal to n, are defective antennas. So that means n minus m are working antennas. How many ordering or patterns such that no 2 defective antennas are together? You think of it as a problem कि आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसके ऊपर 6 एंटेनास लगे हुए हैं, and out of these 6 antennas, अगर 2 नॉन वर्किंग एंटेनास इकट्ठे आ जाते हैं, साथ साथ एडजेसेंट आ जाते हैं, तो योर फोन विल नॉट वर्क. और अगर
ये सिचुएशन नहीं होती, then your phone will work. So for example, if you have one antenna which is not working, the phone will keep on working. If you have two antennas non-working, लेकिन वो दो ऐसे हैं कि वो दोनों adjacent नहीं है, your phone will still keep on working. So I am interested in finding the number of ways that my phone will keep on working. ठीक है? So कैसे इसका solution यहाँ पे कैसे किया हुआ है? Let's space out the working antennas with a space between the adjacent ones, with the space between the adjacent ones. ठीक है? So ये जो 1 1 1 1 ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे वर्किंग एंटेनास हैं, और ये जो बीच में डैशेस लगाई हुई हैं, ये इन सब के बीच में एक एक स्पेस है. सो ये हमारे पास कितनी स्पेसेस होंगी ये टोटल? सो देखें, वी हैड n एंटेनास out of which m were faulty and n minus m were working antennas. ठीक है? सो ये इसका मतलब है कि n minus m वंस हैं आपके पास. ठीक है? तो डैशेस आपके पास कितनी होंगी? डैशेस आर वन मोर देन द नंबर ऑफ वंस. ठीक है? ये वन से पहले भी एक है और ये वन के बाद भी है. सो यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ कि अगर आपके पास एक ही वन होता तो आपके पास दो डैशेस होती, और दो वन होते तो आपके पास तीन डैशेस होती, तीन वंस होते तो आपके पास चार डैशेस होती. तो n माइनस m वंस हैं तो आपके पास n माइनस m प्लस वन, एक ज्यादा सिर्फ इतनी डैशेस हैं, इतनी स्पेसेस हैं आपके पास. ठीक है? सो टोटल n माइनस m प्लस वन स्पेसेस. अब हमने क्या करना है? पिक m आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ n माइनस m प्लस वन स्पेसेस. इन टोटल स्पेसेस में से मैं m स्पेसेस जो है वो पिक कर लेता हूँ. m स्पेसेस पिक कर ली और वहां पे वो फॉल्टी एंटेनास जो है वो एक एक डाल देता हूँ. So how many ways you can pick m spaces, small m spaces out of n minus m plus 1 spaces? ये यहाँ लिख दिया हुआ है, n minus m plus 1, choose m. So many ways you can pick so many orderings. ठीक है? This will give you the all possible patterns in which no two defective antennas are adjacent. ठीक है? Does that make sense? ये सवाल किसने पूछा था? ये सर आप ये चीज क्लैरिफाई कर सकते हैं कि शुरू में और बाद में एंड में भी एक एंटेना क्यों आ रहा है डिफेक्टिव, मतलब दोनों तरफ क्यों आ रहा है और एक ज्यादा क्यों है हमेशा? नहीं, वहां पे एंटेना डिफेक्टिव नहीं आ रहा. वो जो मैंने डैशेस है ना, दीज आर द पोटेंशियल प्लेसेस जहां पे मैं डिफेक्टिव एंटेना डाल सकता हूँ. ठीक है? ये जो डैशेस हैं ये पोटेंशियल प्लेसेस हैं जहां पे डिफेक्टिव एंटेनास आ सकते हैं, और एक डैश पे एक ही डिफेक्टिव एंटेना आ सकता है. ठीक है? सो देखें, मेरा फोन कब काम करेगा? मेरा फोन उस वक्त काम करेगा जब डिफेक्टिव एंटेनास टुगेदर ना हो. ठीक है? ऐसा हो सकता है ना, एक बिल्कुल एज वाला जो एंटेना है वो डिफेक्टिव हो, उसके साथ वाला ठीक हो, फोन काम करता जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन? कि बिल्कुल एज वाला जो एंटेना है, क्या वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? दूसरे एज पे एक और डिफेक्टिव एंटेना हो, 6 एंटेना है और दोनों कोने वाले जो एक लाइन से लगे हुए हैं वो, और दोनों कोने वाले जो एंटेनास हैं वो डिफेक्टिव हो गए, क्या फोन काम करेगा? फोन बिल्कुल काम करेगा. ठीक है? सो देयर इज डेफिनेटली ए पॉसिबिलिटी कि जो डिफेक्टिव एंटेना है वो एज के ऊपर आ सकता है. तो हमने वहां पे ये स्पेसेस डाल दी हैं. ये स्पेसेस वो नहीं है जहां पे मैं डिफेक्टिव एंटेना डालूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने डिफेक्टिव एंटेना होंगे ही नहीं. हो सकता है मेरे पास दो ही डिफेक्टिव एंटेना हो और ये मेरे पास जो है 200 स्पेसेस हो. ठीक है? सो दीज आर द पोटेंशियल स्पेसेस वेयर आई कैन पुट द डिफेक्टिव एंटेनास. ठीक है? दैट इज व्हाई आई से कि आउट ऑफ दीज n minus m plus 1 spaces, choose how many spaces? जितने आपके पास डिफेक्टिव एंटेना है उतनी स्पेसेस चूज कर दें और एक एक डिफेक्टिव एंटेना डाल दें. दैट विल गिव यू अ कॉन्फ़िगरेशन वेयर नो टू डिफेक्टिव एंटेनास आर टुगेदर. Does that make sense? Yes sir, it does. शुक्रिया. ठीक है, great. Next we have Qasim Javed. Qasim साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर आप नीचे जा सकते हैं जरा? जी बिल्कुल. सर यहाँ पे जो आपने टोटल नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, shouldn't it be n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m फैक्टोरियल? क्योंकि वो एंटेनास आइडेंटिकल है तो हम ओवर काउंटिंग कर रहे हैं उनकी. नहीं, देखें, आइडेंटिकल तो हैं लेकिन नंबर्ड हैं. ये सारे एंटेनास जो है ना, ये सारे एंटेनास
नंबर्ड हैं। आप ये कह रहे हैं you have n antennas of which m are defective. तो आप कह रहे हैं कि ये n फैक्टोरियल के अंदर ओवर काउंटिंग हो रही है। हाँ जी सर। तो क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर यहाँ पे होना चाहिए n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल, क्योंकि डिफेक्टिव एंटीनाज भी एक दूसरे के सिमिलर हैं और जो ठीक हैं वो भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। हाँ, I tend to agree with you, और थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, कोई और मिस्टेक ना हो रही हो, बट I tend to agree with you कि ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना, ये n फैक्टोरियल के बजाय n फैक्टोरियल के बजाय ये n चूज m हो। सो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे n फैक्टोरियल के बजाय n चूज m होना चाहिए, राइट कासिम? सर मैं वो नहीं कह रहा। हाँ जी ठीक है वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वही कह रहे हैं, क्योंकि आप जी कह रहे हैं सर। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल होना चाहिए, which is n चूज m। जी सर। ठीक है, I have a feeling कि you are right, लेकिन इसको जो है ना सील करने से पहले जो है ना वो एक दफा दोबारा सोचना पड़ेगा। सो आई विल आल्सो थिंक अबाउट इट। मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि शायद डबल काउंटिंग यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो रही होगी, क्योंकि n फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, बट या रिकन्फर्म करना पड़ेगा इसको दोबारा से। सर जो आपने जी जो आपने 4 एंटीनास वाला प्रॉब्लम किया था जिसमें 2 डिफेक्टिव थे और 2 ठीक थे, ठीक है, तो अगर जी हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास n फैक्टोरियल 424 आएगा। जी ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ ही नहीं सकता अगर हम ये n फैक्टोरियल लगा दें तो। जी, डिनोमिनेटर में 6 नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमने जब किया था तो 6 पॉसिबिलिटीज थी उन जी एंटीनास को अरेंज करने जी की। ठीक है, तो जी वो जी उसी सूरत आएगा जब हम 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड देन यू नो, एज आई सेड कि आई टेंड टू एग्री विद यू। फाइनल कंफर्मेशन इसकी जो है हम बाद में करेंगे, बट ग्रेट पॉइंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये लेट मी just give me a second, I'm going to make a note of this. Sir, I have a question. जी, एक सेकंड मुझे sir, देंगे, मैं जरा इसको नोट जी कर लूं, ये जो अभी डिस्कशन के अंदर आया है। पेज 8 पर है। ग्रेट। सो मैं बोलूं? जी इसी के बारे में जजलान, या कोई जी अलग क्वेश्चन है? अगर जी सर। जी सर आपने सही किया हुआ है, ये आपने सही किया हुआ है, बिकॉज आपसे कहा गया है कि फ्रॉम दी अबव एन चूज एम हाउ मेनी सिस्टम्स विल, मतलब कितने सिस्टम्स हैं जो वर्क करेंगे। ऊपर आप क्वेश्चन में अगर पढ़ें, इट सेज दैट यू हैव टू रैंडमली प्लेस ऑल ऑफ दीज एंटीनाज ऑन अ डिवाइस इन अ रो। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपके पास एम है विच इज़ लेस देन एन, टोटल नंबर ऑफ एंटीनाज आपके पास n है, तो अगर आप उसको एक लाइन में प्लेस करेंगे तो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं वो हाँ जी n फैक्टोरियल है। और आप कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिस्टम विल वर्क, तो उसमें आपने करना है कि n माइनस m प्लस 1 चूज m करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट विल वर्क, और फिर आपने उसको डिवाइड किया हुआ है n फैक्टोरियल से, विच आर द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स।
तो आपके पास करेक्टली प्रोबेबिलिटी आ गई है कि अगर आप रैंडमली कोई भी अरेंजमेंट चूज करेंगे तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क। that is true, but शायद यहाँ पर उनका जो है ना कहने का मकसद ये था कि ये जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो है ना, आपको पता है कि जब कॉम्बिनेशंस हम करते हैं ना, तो एक बड़ी कमेटी में से मैंने एक छोटी कमेटी मैंने पिक कर ली है, तो n-m+m+1 में से मैंने ये m जो पिक कर ली है, इसके अंदर जो है वो डबल काउंटिंग नहीं हो रही होती। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेटर्स A B C D E F, इन 6 में से आपने अगर 2 पिक करनी है तो पिकिंग A and B इज द सेम एज पिकिंग B and A, वो एक दफा काउंट होता है, राइट? जब आप कॉम्बिनेशंस लेते हैं ना तो A B और B A बस एक ही बार काउंट होता है। सो यहाँ पर जो है ना वो उनके कहने का मकसद ये है कि अगर आप न्यूमरेटर के अंदर जो है वो आप सिचुएशन को एक दफा काउंट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो है वो आप अलग-अलग उनको क्यों काउंट कर रहे हैं? सर बिकॉज आपने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि यू हैव टू रैंडमली प्लेस ऑल ऑफ दीज एंटीनास ऑन अ डिवाइस इन अ रो। मतलब ये कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फॉरगेट फॉर अ मोमेंट कि जो है ना ये एंटीनास सारे डिस्टिंक्ट हैं एंड वी हैव टू प्लेस ऑल ऑफ दीज। आप जो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं उसके अंदर आप यू आर क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द एंटेनास कि जी जो डिफेक्टिव हैं वो नॉन डिफेक्टिव, मतलब 2 डिफेक्टिव एंटेनास को आप साथ नहीं लगा सकते जी। और उसके अंदर आपने कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट की हुई। ये वही हो गया ऊपर कि आपने टोटल नंबर ऑफ कमिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर जो की थी आपने, उसमें आपने फैक्टोरियल यूज किया था जी। एंड राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग बेसिकली आप n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल उस वक्त करेंगे जब आप बोलेंगे कि जी m फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स जो है ये रिपीट हो रही हैं। बट इधर हमने वो डिस्टिंक्शन ही क्रिएट नहीं की कि कोई एंटेनाज आपके डिफेक्टिव हैं कि नहीं। आपने कहा है कि बस n एंटेनाज हैं, इनको एक लाइन में प्लेस करने की जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज है दैट्स n फैक्टोरियल। ठीक है जजलान, पॉइंट वेल टेकन। आई वुड से कि इसको जो है ना एक जो 4 एंटेनाज या 5 एंटेनाज वाली एक उसके ऊपर जो है ना रन करके, इसका ड्राई रन करके और फिर देखना पड़ेगा। बाज दफा ये होता है कि यू नो इस आर्गुमेंट अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि यार ये काउंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। सो दोनों मे बी यू आर राइट, मे बी जो पहले उन्होंने जो किसने पॉइंट रेज किया था, ये रेहान ने किया था या somebody else, whoever raised that question, तो आई विल नीड टू मेक श्योर कि हमें एक्यूरेट आंसर का पता है। उसके लिए जो है वो एक कंक्रीट एग्जांपल ले लेंगे 6 एंटेनास की, एंड उस 6 एंटेनास की उसके ऊपर जो है इसको एक सिमुलेशन रन करके देख लेंगे कि ये आंसर हमारा क्या निकलता है। ठीक है, that does sound more like वो sensible to do। जी एक कॉन्फर्मेशन हो जाएगी ना, एक कॉन्फर्मेशन हो जाएगी सर। वही कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज। जी एंड इट इज यू नो मैं भी बैठ के मैं काफी टाइम से ये कोर्स पढ़ा भी रहा हूँ। अगर मुझे भी कहेंगे तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगी, ओ यार मे बी ये डबल काउंटिंग ना हो रही हो यहाँ पे। सो आई थिंक कि वो जो पॉइंट रेस किया है उन्होंने कि नीचे डबल काउंटिंग हो रही है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जो है वो आप सिंगल काउंट कर रहे हैं। सो यू नो दैट पॉइंट इज आल्सो वैलिड। तो उसको रन करके देख लेंगे हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एंटेनास के ऊपर। if any of you is willing to help with that, तो प्याजा पे पोस्ट कर दें इसको सॉल्व करके, 4 एंटेनास और उसमें से 2 खराब हों या 6 में से 3 खराब हों या समथिंग लाइक दैट। सो दैट वुड आई वुड अप्रिशिएट दैट। मैं अपने तौर पे भी इसको सॉल्व करूंगा, राइट? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम निदा। निदा, आपका क्वेश्चन? Yes, sir. My question is from these notes, like on the second last page, where we did the proof. I didn't really understand that. Like ये सेकंड लास्ट पेज, ये तो अभी हमने लेक्चर्स कवर ही नहीं किए ना। ये these notes are oh okay, क्योंकि एक like homework problem थी जो it was problem 9, and in that like they're saying that well, they gave us a grid and then we have to look at the possible ways we can sure. So I will give you a hint about that.
वो जो Okay. ग्रेड वाली जो प्रॉब्लम है, so in the grade वाली प्रॉब्लम you are sitting at one corner and you have to reach lower left corner पे आप बैठे हैं and you have to reach the upper right corner, right? That's the problem that you are talking about. ऐसा ही है ना? Yes. ठीक है? So if you look at that grade, that grade is a 4/3 grade. So you have to, in order to reach from lower left to upper right, from lower left to upper right, you have to move right 4 times and you have to move up 3 times. ऐसा ही है? Yeah. Yeah. So that means ke you need to make 7 moves. You need to make 7 moves, and these 7 moves should be 4 rights and 3 ups. 4 rights and 3 ups. So you can do the following: R, 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 and then U, right, 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 up, up, up. Or you can do the following: okay, up, 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 and then right, 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 right. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. So these are the 2 ways. उसके लिए ये अभी ये जो आप सेकंड लास्ट पेज के ऊपर जो नोट्स में है ना, ये तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स एंड नन, ये अभी हमने कवर ही नहीं किया. ये 3rd और 4th लेक्चर के अंदर कवर होने वाला है. इन नोट्स के अंदर हमने पहले ही दे दिया. सो टू सॉल्व दैट ग्रेड क्वेश्चन, थिंक अबाउट द फॉलोइंग, कि इन हाउ मेनी वेज you have to pick how many ways you can arrange. परम्यूटेशन कितनी हो सकती हैं? 4 R's हैं और 3 U's हैं. How many ways you can permute these? Okay. So, because I thought that maybe we can do, like apart from that, like if we move up and like right and then down or stuff like that. So we don't have to worry about that. I think there was a restriction that you can't move down or to the left. Probably there was a restriction in that question. I think there was. Okay. Yeah. It says only like 1 up and then right. Ji. Thank you, sir. Yeah, but interestingly, if you are allowed to move down or to the left, then the problem will become very, very difficult. Very, very difficult, because you can think about, there will be actually infinite ways जिसमें you can go from lower left to upper right. अगर हम लेफ्ट पे जाने की या नीचे आने की भी इजाजत दे दें. ठीक है? Okay, so who is next? Nida, you have any other question? Aapka, your hand is still up. No, sorry, sir. I just putting it down. Then we have Malaik Kabir. Please go ahead. Ji Malaik. Like, you have a question? We are unable to hear you. नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन? Like आपकी, I think you are right. Your microphone is not working. You might want to type the question, unless if you are on the phone. Phone पे भी type तो हो जाएगा, जरा मुश्किल होगी, but please go ahead and type the question if it's something that you can type. Meanwhile, if somebody else has a question or comment or want to discuss any of the material, please go ahead. Aha, yeah. So Malaik, I think I got your question. You just need to confirm whether I got it right or not. I think
what you are doing is you are asking about the permutation in which there is repetition. So I am just going to go here. So in the case of permutations, case 1 is about distinct objects, and I think what you are talking about is case 2, that some objects are distinct while some are not distinct. Okay. So my question was that we solved it by dividing it by 2 factorial, but intuitively it feels like we can also use 4 choose 2 somehow. In fact, you can 4 choose 2 हम क्यों use करेंगे? We have to have some sort of intuitive justification के 4 choose 2 का मतलब ये है कि you know, when you say 4 choose 2, basically you have a group of 4 objects or people or items, and then you have to pick 2 out of those. How many ways you can pick those 2? So that's 4 choose 2. In this case, we are talking about the permutation of the entire set. यहाँ पे आपके पास A, B, C, D, ऐसा नहीं है A, B, C, D में से मैंने एक सबसेट पिक करना है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि A, B, C, D को बस मैंने rearrange करना है. How many ways I can do that? And we saw that it's 4 factorial. कि पहला बॉक्स है, उसमें इन चारों में से कोई आ सकता है, टाइम्स द सेकंड बॉक्स, इन 4 में से एक तो चला गया, फिर 3 बाकी जो रह गए वो आ सकते हैं. ठीक है. एंड देन we have this repetition of A, B, C, A. So this A is repeated. Okay? So I'm sure that we can think about solving it using the n choose 2, 4 choose 2 type of thing. But really, अगर intuitively देखें, तो शायद intuitive explanation is easier to obtain if you consider this A, B, C, A as, consider these 2 A's are 2 different A's, A1 and A2, जिसके लिए हमें पता है कि 4 factorial आपके पास 4 factorial permutations हैं. जो A, B, C, D के केस में आपके पास 4 factorial permutations हैं. So इसी तरह A1, B, C, A2 के केस में भी आपके पास 4 factorial permutations हैं. But we also know that A1, A2 they are the same. तो ये आपके पास A1 B C A2 हो जाए या A2 B C A1 हो जाए. So these two are exactly the same. So that means कि हम इन दोनों को जो है ना वो डबल काउंट कर रहे हैं. कितना डबल काउंट कर रहे हैं? A1 और A2 की जितनी आपस में परम्यूटेशंस होती हैं वो डबल काउंट कर रहे हैं. उस डबल काउंटिंग से डिवाइड कर दें. Now what you are mentioning is कि ये 4 factorial divided by 2 factorial, ये जो हमारा आंसर आ गया है. So हम इसको ऐसे व्यू कर सकते हैं कि this is 4 choose 2 multiplied by 2 factorial. Well, you can view it that way. मुझे पता नहीं है उसकी intuitive explanation हम कैसे देंगे. आंसर तो हमारा सेम आ जाएगा, but I don't have an intuitive explanation. Combinations use करनी पड़ेंगी. Combinations is picking some stuff from a larger group, picking a small group from the larger group. Okay? So that is answered by combinations. Okay? Why do we divide the number of repeated patterns and not subtracted? Because of the basic counting principle. Subtract इसलिए नहीं करते. बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जैसे आप एक डाइस रोल करें और कॉइन टॉस करें, 2 multiplied by 6 करते हैं, 2 plus 6 नहीं करते. ठीक है. सो यूं देखें कि ये A1 A2 की जो परम्यूटेशंस हैं, जो 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस हैं, इससे मैं डिवाइड करता हूं, ये माइनस नहीं करता, इसलिए कि फॉर एवरी अदर कॉम्बिनेशन यू विल हैव दिस A1 A2 अपीयरिंग. फॉर एवरी अदर कॉम्बिनेशन A1 A2, इनकी आपस में जो परम्यूटेशंस होंगी वो 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन. वो रेस्ट ऑफ द गाइस आप उनकी हर कॉम्बिनेशन, हर परम्यूटेशन के लिए ये A1 और A2 आपस में परम्यूट कर सकते हैं. So that means we will need to divide it because of the basic counting principle. ठीक है? Does that make sense for us? और
और अगर इसको मजीद क्लैरिटी लेनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये एग्जाम्पल ही लेके देखें, आप ये एग्जाम्पल ही लेके देखें और यही एग्जाम्पल ले लें, ए बी सी, ए की एग्जाम्पल ले लें एंड ट्राई टू यूज A1 एंड A2 और उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करके कोशिश करें, तो यू विल सी के वो आंसर ही ठीक नहीं आएगा, बिकॉज एंड देन व्हाइल यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज यू विल रियलाइज कि वो आंसर क्यों नहीं ठीक आ रहा है. So Manur has a question in combination formula, why there is n minus r plus 1 at the end. What is the reason of adding 1? Combination formula? Which combination formula? We don't have n minus r plus 1. Manur, किस वाले की बात कर रही हैं आप? Derivation कर रहे थे NCR की. n choose r. n choose r में हमारा n minus r plus 1 तो maybe you are talking about the antenna problem. Let me see. Yeah, I think you are talking about this antenna problem. आपकी आवाज एक्चुअली सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, माइक इज मफल्ड, so maybe you want to type as well. You want to type out which problem you are talking about? ये ऊपर था, अगर ऊपर पे नीचे ऊपर था. ओ ये वाला, so ये फॉर्मूला की डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम, राइट? Okay. So for selecting r objects from n distinct objects, the number of different groups is ये हम n minus r plus 1 तक क्यों गए हैं? हम इसलिए n minus r plus 1 तक गए हैं कि यूं देखें इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसके अंदर पूरी करनी है, ठीक है? सो हाउ मेनी टर्म्स इन द न्यूमरेटर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है? सो पहली वाली जो टर्म है n minus 0 है, n minus 0 जिसको हमने n लिखा हुआ है यहाँ पे. दूसरी टर्म है n minus 1, तीसरी टर्म है n minus 2, ठीक है? सो n minus 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n minus r minus 1 माइनस कर रहे हैं, so r minus 1 in the bracket, so that becomes n minus r plus 1. So how many total terms here? How many total terms which are being multiplied together? ठीक है? So ये मैं actually chat window के अंदर टाइप कर देता हूँ इसको, n minus r plus 1 जो ये लिखा हुआ है, you can view it as n minus r minus 1, ठीक है? इसको हम ऐसे कर सकते हैं. So you started from n minus 0 and then n minus 1 and then n minus 2 and then so on and then n minus r minus 1, ठीक है? So ये 0 से लेके r minus 1 तक आपकी काउंटिंग है, 0 से लेके r minus 1 तक. तो टोटल आपके पास कितनी टर्म्स हो गए? r टर्म्स हो गई, और ये r ही होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास r ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? So basically, Manur, आपको समझ आ गई है, ठीक है? And Mukim, you have a question. What is r minus 1 here? देखें, ये आपके पास ये combinations का हम जब formula derive कर रहे हैं ना, r n distinct objects हैं, and you have to pick r of them. How many different groups? So r is less than n, less than or equal to n, ठीक है? How many different subsets? So you basically इसकी example ये ऐसे दी है कि ये आपके पास A B C D E 5 letters हैं, उसमें से 3 पिक कर रहे हैं, ठीक है? Consider 3 boxes, imaginary 3 boxes, ठीक है? पहले बॉक्स के अंदर आप इन पांचों में से कोई सा भी लेटर डाल सकते हैं, ठीक है? दूसरे बॉक्स के अंदर अब 4 पॉसिबिलिटीज रह गई हैं क्योंकि पहला लेटर आपने डाल दिया उसमें, ठीक है? और तीसरे बॉक्स के अंदर आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज रह गई हैं. तो ये आपने कहां तक जाना है? 5 multiplied by 4 multiplied by 3.
क्यों ये 3 तक क्यों गए हैं, 2 तक क्यों नहीं गए या 4 पे क्यों नहीं रुक गए? इसलिए कि आपके पास R बॉक्सेस हैं. सो ये 3 बॉक्सेस हैं, तो 5 multiplied by 4 multiplied by 3, there are 3 terms which need to be multiplied. ठीक है, 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होने चाहिए. तो 0 से r-1 तक जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली r टर्म्स हो जाएंगी. If you have 3 objects, you will go from n-0, n-1, n-2. If you have r terms, you will go from n-1, n-0, n-1, n-2, all the way up to n-r-1. ठीक है. So काउंटिंग जब 0 से स्टार्ट करें तो एक आपको कम करना ही पड़ता है. 0 से 9 तक आपके पास 10 डिजिट्स हो जाएंगे. ओके ओके, ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कमेंट हो? कोई क्वेश्चन नहीं है. By the way, we have a homework out. Rehan का कुछ और है. This is unrelated to the lecture, but could you explain what question 1 from the homework is asking? I'm having trouble with something. Question 1 from the homework. Question 1 तो बहुत सिंपल था, वो डाइस वाला नहीं था. Let me just quickly see कौन सा था ये. Rehan, if your mic is working, please feel free to speak. Can you hear me? Yeah, of course, we can hear you. I'm just confused by what this is saying when it says, for instance, that the outcome is 3, 4, 3, 1 if the first row landed on 3, the second on 4, the third on 3, and the fourth on 1. Hanji. So you are not able to understand what that means. ये एग्जांपल जो दे रही है वो ये कह रही है कि आपके पास डाइस हैं जो आपने रोल करने. ठीक है. And when you roll these dice, let me just open this. इसको open कर लेता हूँ. So ये आपने एक डाइस को 4 बार रोल करना है. पहली बार रोल किया तो आपके पास क्या चीज आएगी? कुछ भी आ सकता है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. फिर दोबारा रोल करेंगे, फिर क्या आ सकता है? फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6. ओके. एंड देन अगेन फिर 1 2 3 4 5 6 एंड देन फिर 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो 4 बार आपने उसको रोल किया है तो एक पॉसिबल आपके पास जो आउटकम आ गई है, एक पॉसिबल सीक्वेंस जो आपके पास आ गई है कि पहले 3 आ गया, फिर 4 आ गया डाइस के ऊपर, फिर 3 आ गया और फिर 1 आ गया. ठीक है. दैट्स वन पॉसिबल सीक्वेंस. एक और पॉसिबल सीक्वेंस क्या हो सकती है? एक और पॉसिबल सीक्वेंस हो सकती है 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 1 आ गया. Oh, so is this just asking for the total number of sequences possible when we roll a dice 4 times? Total number of sequences possible. That's right. That's right. Okay. Thank you. How many outcome sequences are possible? Right? यही outcome sequences ही हम पूछ रहे हैं. Yes, I was just confused by the example. I wasn't sure what that meant. Yeah. What was confusing? Please let me know so that I fix it. मैं उसको fix कर दूंगा. But what do you think is confusing in the statement? I thought that it was asking like the probability of getting 3 4 3 1. No. So 3 4 3 1 is just an example sequence that you will see. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Does it make sense? Yes, it does. ठीक है. और Faraz, does this make sense to you as well? फराज साहब कमेंट देके आप चले गए हैं. ओके. एनीवे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? anything else that we want to discuss? I think it would be आज की डिस्कशन के बाद
I have come to the realization कि it would be very useful for you guys. Videos तो आप लोग सब देख रहे हैं, but you know I also upload these notes. और ये notes जो हैं ये videos के साथ by the way synchronized नहीं है. So for example, the notes set that you have, it covers some future videos as well. But it is in sequence. एक sequence में ही होगा. So I think it would be a great idea कि अगर ये जो notes हम upload करते हैं, ये notes भी आप go through these very quickly. These are not very difficult, especially if you have seen the videos. तो videos देखने के बाद जो है ना ये notes जो है ना they will make a lot of sense to you. Basically, it's a neater version of ये notes मैंने last year ही बनाए थे, और जो भी class के अंदर जो भी काम होता था, in the class you explain a lot of things, तो वो बहुत rough काम हो रहा होता है उसमें. But वापस आके फिर जो है वो मैं घर पे मैंने ये इनको neat notes कर दिए थे. So the sequence remains the same, topics remain the same in that sequence. So उसमें topics जो है वो आगे पीछे भी नहीं होंगे. So please make sure कि go through these notes, और आप अपने जो problem है अगर उसमें कोई page number भी अगर आप if you can identify or write with yourself, और जब यहाँ पर आए तो discuss कर लें, we can quickly open the notes और उनको हम फिर screen share कर सकते हैं. Maybe next time I will try to use my iPad to share the notes. Notes को share करने ताकि मैं उसके ऊपर फिर लिख भी सकूं. आज तो मैंने ये screen sharing जो की है ये मैंने अपने desktop से ही जो है वो screen sharing कर ली थी, जिससे probably not the best way because I am unable to write on that. लेकिन मैं अगर iPad से share करूंगा तो उसके ऊपर फिर मैं write भी कर सकूंगा. ठीक है. Any other question? कोई चीज ना समझ में आई हो? Who would like to volunteer for solving that? वो जो antennas वाली problem की generalization थी जिसमें हमें वो नीचे n factorial वाली confusion हो रही है. Any volunteer? कोई volunteer करेगा उसके लिए? And post on Piazza. Ibad, thank you very much, and Qasim, thank you very much. Why don't you two try to solve it, or we can also have अगर आपने मेरे से discuss करना हो तो वो office hours वाला जो link है उस पे हम discuss भी कर सकते हैं, but we will need to set up a time. या Piazza पे post कर दें या email कर दें, जिस तरह से भी. Thank you. Okay, great. I think if there are no more questions, we will have a quiz. Quiz के बारे में भी मैं बता दूं. It's going to be a simple quiz, very simple. जो अभी तक हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, 2 lectures के अंदर जो है वो very few topics have been covered. लेकिन ये basic counting वाले हैं. It's just going to be a questions related to basic counting, permutations, combinations, maybe a little bit about probability. For the homework, जो questions homework में दिए हैं, you can expect to see similar kind of questions. और preparation के लिए जो ना बस ये homework की है, try to solve those problems on your own. Although we have allowed students to group with each other, it would be very, very useful for you if you can think about the problems, spend time thinking about the problems on your own, even if you're partnering with other people. और फिर quiz में इंशाल्लाह कोई difficulty होगी नहीं आपको. So quiz जो है वो we will have the quiz during the class time on Tuesday. Probably 8:30. हम 8:30 पे start करेंगे. उससे पहले जो है, if there are any questions about the homework, so homework where do we submit the homework? Homework के ऊपर जो है ना वो हमने instructions दी हुई हैं कि आपने homework जो submit करना है ये online submit करना है. There is a assignments tab on LMS, and वहीं पर आपने ये submit करना है, right? And then no email submission. We have absolutely no way of taking that submission and putting that
on LMS, वो आप ही को करना पड़ेगा. So group submission का भी जो है ना वो उसमें उसके अंदर instructions लिखी हुई हैं. Please make sure you go through those instructions. और instructions यही हैं कि only one member of the group has to make the submission. और जो front page है उसके ऊपर very clearly names and student IDs of your group mates वो सब आप लिख दें, ठीक है. There is no need to make separate submission, right? उसको दोबारा separate submission करने की कोई जरूरत नहीं है. Just to be sure, where are the instructions for submission? Submission की instructions जो हैं वो homework 1 के front के ऊपर ही होंगी. I think if you open homework 1, second paragraph, it's submission instructions, right? But you have access to the homework 1 handout. Great. Okay. Fatma, you have a question? Yes, sir. Sir, Ji, for ji, the please go ahead. homework, we only get marks for submitting all the questions. We don't get marks for correctness, right? The percentage is very small. We will be very generous in grading the homeworks. So for submission only, for your effort. That's true. और कोई क्वेश्चन हो? No question. Okay, then I will stop the share and end the session. If there are any questions, please do post them on Piazza. ईमेल करेंगे तो देर से जवाब आएगा, Piazza पे पोस्ट करेंगे तो जल्दी जवाब आ जाएगा. So beneficial for the entire student community कि अगर आप Piazza पे पोस्ट करें. Okay, thank you very much guys for showing up and for the interesting discussion. सब लोग जिन्होंने सवाल पूछे और जिन्होंने सुने, thank you very much and I will see you on Tuesday. By the way, homework का solution जो है वो will upload soon after it is due. ठीक है? Okay जी, खुदा हाफिज़, take care.